ये है Realme GT Neo 2, Realme का लेटेस्ट हाई एंड स्मार्टफोन। सबसे पहले अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये फ़ोन जो है वो अवेलेबल नहीं है फॉर परचेज राइट नाउ इन पाकिस्तान, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप खुद ही इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको वो सारे PTA के टैक्सेस करने देने पड़ेंगे। बट इफ़ यू डू गेट दिस फ़ोन इट्स प्रीटी स्वीट। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं दैन प्रेस द लाइक बटन। सो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की और ये ड्रैगन बॉल जी थीम की। ऑलमोस्ट एवरी मिलेनियल और जेन जी पर्सन हैज़ हैड अ ड्रैगन बॉल जी फेस। यू नो देयर वाज अ टाइम जब हम सारे ड्रैगन बॉल जी के पीछे बहुत पागल थे, और मेरे लिए ये टाइम जो था वो 10 years पहले था। Watching Dragon Ball Z or making Dragon Ball Z sketches was pretty much my only activity after school. और fun fact, Dragon Ball Z sketches बनाने से ही मैंने Photoshop सीखा। अगर मेरे पास ये फ़ोन 10 years पहले होता, I would have been the coolest kid in school. Everyone would be so jealous and all the girls would like me instead of Danish with his Beyblades. Anyways, the thing is that I love this theme. और usually इस तरह के जो themed phones होते हैं they are like kind of a cash grab, you know, इतनी effort नहीं होती उनके अंदर. But this one, there's a lot of effort put into this phone, into this theme. इसके पीछे जो ये बैक मटेरियल है, this is metal, and this is all painted on the metal, which is very difficult to do. And also जो ये पीछे logo है, this is engraved in the body of the phone, so you feel it, like it feels slightly different than the rest of the skin, and it feels really good and really satisfying. और ये side frame, this is blue, and the power button वो भी also orange color का है, so it makes a really nice contrast with the rest of the phone. And also I have never used a phone जिसका side frame जो है वो metallic हो और इस तरह से blue painted हो. That's really exciting for me. Back के ऊपर जो ये texture है, the blue color has a slightly different texture and the orange color has a different texture. I really like that. It feels so good in the hand. It's like it shows that they put a lot of effort and put a lot of thought into this. I really like that this entire phone is made of metal. I have missed this so much. Like remember Galaxy S6 से पहले जो phones थे, they used to have this metal back, and I was a big fan of that. I think it feels really premium. Galaxy S6 आया and then suddenly all the phones are made of glass now. It's great that I don't have anything against glass, but it's starting to get repetitive, you know. Like सारे phones glass के हैं, glass. So I'm really happy that this is finally back to metal, and I hope this trend catches on, that more phones are made of metal in the future, aluminium. क्योंकि ग्लास ठीक है, इज़ फाइन, बट आई एम बोर्ड ऑफ इट। ग्लास फोन्स के अंदर आई फील स्लाइटली एंशियस कि मैं फ़ोन को ड्रॉप कर दूँगा और ग्लास टूट जाएगा, सो आई डोंट फील दैट इन दिस फोन. दिस इज़ सॉलिड मेटल. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी आई लव इट. आई लव दिस ड्रैगन बॉल जी थीम जो कि इन्होंने पीछे लगाई है, एंड आई लव कि ये स्लाइटली डिफरेंट टेक्सचर है इसके बैक के ऊपर. दैट्स रियली सेटिस्फाइंग फॉर मी. जो इस फ़ोन का फ्रंट पैनल है वो 6.62 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले है, और साथ साथ इट्स आल्सो HDR and it's also 120 Hz. And that's pretty much it. That's like all my check boxes. That's what I want in a smartphone display. I want all those things. I want AMOLED, I want HDR, I want 120 Hz. और इस डिस्प्ले के अंदर वो सारी चीज़ें हैं. So immediately this is a very satisfying display. It's a really good display. The color contrast and everything just pops. क्योंकि you know एक AMOLED display है, साथ से HDR भी है. You know, because of HDR, the colors pop on this phone. So watching movies and TV, that's a really good experience. क्योंकि ये एक AMOLED display है, there are features like always on display, और साथ साथ there's also an in-display fingerprint sensor, which is really fast. कैमरे के बारे में बात करते हैं. कैमरा वाइज इसकी बैक के ऊपर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर एक मेन 64 मेगापिक्सल लेंस, एक 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है. और जिसका फ्रंट कैमरा वो एक 16 मेगापिक्सल सेंसर है. क्योंकि एक हाई एंड फ़ोन है, द कैमरा इज़ ऑब्वियसली गुड. It takes really great photos, plenty of saturation, plenty of clarity. Everything is pretty much good in the camera department. Lastly, performance के बारे में बात करते हैं. Performance वाइज इसके अंदर एक Snapdragon 870 प्रोसेसर है, which is a really high-end processor. So there is absolutely zero lag in going through the phone. Apps open really quickly. There's pretty much no stutters, कोई headache नहीं है. It's a really good software experience. और क्योंकि एक 120 Hz display है, everything is just buttery smooth. ऑल्दो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर इज़ स्लाइट डिस्क्लेमर कि क्योंकि दिस इज़ अ चाइनीज़ वेरिएंट, इसके अंदर गूगल ऐप्स नहीं है, सो दैट कैन मेक थिंग्स अ बिट ट्रिकी, बट इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. सो इफ़ यू डू एंड अप गेटिंग इम्पोर्टिंग दिस फोन, यू विल हैव टू इंस्टॉल द गूगल ऐप्स. इसके अंदर एक 5000 mAh बैटरी भी है. Overall, I really like this phone. I love that it has top of the line specifications, fantastic build quality, great camera, great battery life. It just checks all the boxes. I really hope कि ये फ़ोन जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो, क्योंकि बिकॉज Realme के फ़ोन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते. गेटिंग एन 870 प्रोसेसर और ये सारी स्पेसिफिकेशंस बहुत थोड़ी प्राइस के अंदर, दैट वुड बी अ रियली फैंटास्टिक थिंग. अभी मेरे पास Poco F3 एज माई डेली ड्राइवर, जिसके अंदर भी 870 प्रोसेसर है, लेकिन अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेटर कैमरा
and it has faster quick charging. So अगर ये launch होता है तो I will be like all over this. I will get it immediately and I will immediately recommend it. So thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद है तो please like and share and subscribe and all those things, and I'll see you in the next one. Peace.